So friends, first I will tell you what are father wounds. ये father wounds आते कहाँ से हैं? ठीक है, we all carry this. Now, some traits of fathers, or you can say your grandfathers, also give us these father wounds. All right. So, like absent father, when we are growing up, और हम देखते हैं कि फादर जो है वो उसकी प्रेजेंस ना के बराबर है हमारी लाइफ में, isn't it? You get up early in the morning and you see that your father has already left, and sometimes when you go to sleep your father has not come back yet, or maybe your parents are divorced and we see that the father is absent in the family. Sometimes the father stays far away, कोई दूसरे शहर में रहते हैं, कोई दूसरी कंट्री में रहते हैं. So all these absentee fathers, they give us father wounds. Now I'll tell you later कि इनके effects क्या क्या होते हैं अगर absent father है. और भी बहुत तरह के fathers, we have certain traits in fathers which give us these wounds. All right. And it is not about the father being good or bad or right or wrong. It's just a part of life which gives us these lessons, because your father is not at fault. All right. Because father has also been carrying those wounds and is not aware of those wounds, and unknowingly वो वही wounds आप तक भी पहुंचा देते हैं. जैसे कि अगर आप अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे तो आप भी ये wounds अपने बच्चों को दे देंगे. नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट कंट्रोलिंग फादर्स. बहुत ज़्यादा बॉसी फादर्स जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं बच्चों को, एंड दे डोंट अलाउ यू टू ब्रीद इन योर ओन स्पेस. ओके, दे आर जस्ट लाइक अ टेरर. वी कैन कॉल देम टेरर फादर्स ऑल्सो, जो एक टेरर की तरह हैं, जो सभी डरते हैं. मदर, इंक्लूडिंग द मदर, एवरीबडी इज स्केर्ड ऑफ दिस फादर. So definitely this father brings lot of wounds. All right. This nature of father. I'm not going to say father brings the wounds, but this behavior brings the wounds. Then we have pushing fathers, जो बहुत हर चीज़ के लिए आपको पुश करे जा रहे हैं. आप बहुत ज़्यादा नज करते हैं, बहुत ज़्यादा बात बात पर आपको इसको एक हिंदी में एक प्रॉपर टर्म है इसके लिए. आई एम नॉट गेटिंग दैट टर्म राइट नाउ. आप कह सकते हो कि आपको हमेशा इरिटेट करते, इतना ज़्यादा पुश करते हैं कि आपको इरिटेट करते हैं. तो इस तरह के फादर्स भी जो जो कि शायद अपने ड्रीम्स अपने बच्चों के थ्रू जीना चाहते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा पुश करते हैं. Or abusive. Some fathers are very abusive, right? So abusive fathers give lot of, that nature of father gives lot of wounds, because hearing the words from your father. Now, abusive can be verbal, it can be physical also. So if father is abusive, if father is physically abusive, तो बहुत ज़्यादा घाव है ही. फिजिकली ज़्यादा घाव है, लेकिन अगर वर्बली अब्यूजिव है तो फिर आपके घाव और भी ज़्यादा गहरे हो जाते हैं. एंड सम फादर्स आर वेरी निग्लेक्टिंग. यू फील वेरी निग्लेक्टेड. और मैं एक चीज़ आपको आखिरी में कहूँगी यहाँ पे. लेट मी फिनिश विद दिस. सो निग्लेक्टिंग फादर्स, जो कभी अवेलेबल ही नहीं है, अब वो आपके सामने होते हुए भी नहीं के बराबर हैं. नेवर कनेक्टिंग विथ यू ऑन द इमोशनल लेवल, नेवर गिविंग यू दैट लवी डवी टॉक्स और दैट मैनली टॉक्स. या फिर आपके साथ बैठकर कभी खाना नहीं खाते, आपके साथ बैठकर खेलते नहीं हैं. So all these fathers, those who neglect their children, thinking that it is mother's job, या फिर उनके लिए तो हमने trainers, tutors लगा दिए हैं, तो they are the neglecting fathers. Okay, then we have the overprotective fathers, जो बहुत ज़्यादा गार्ड करते, कुछ भी आपको कोई भी डिसीजन खुद से लेने नहीं देते हैं. दे आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट यू. They do not allow you to take
any step by yourself, because they want to guide you. They want to always hold your hand. They want to protect you from the world, even though the intention may not be bad, but then it is bad for you. All right. देन वी हैव द पुअर एंड वीक फादर्स. अगर आपने अपने फादर को बहुत ही बेचारा देखा है, एक विक्टिम की तरह देखा है, जो बहुत खुद से अब्यूजिव है, यानी सब्सटेंस अब्यूज़ में है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, मम्मी से डरते हैं, मदर इन लॉ से डरते हैं, या फिर अपने फादर मदर से डरते हैं, तो इस तरह के फादर भी बहुत गहरा इम्पैक्ट लेकर आते हैं. And most of the times when father is emotionally unavailable, यानी जब आपको एक्चुअल में ज़रूरत है तो वो आपके साथ नहीं है. So all these traits of masculine energy, now this is the most important thing I want to share here, is it is not only about the father, it's about the masculine energy. So sometimes mothers are in masculine energy, okay, and they take the role of these fathers, and when they also carry all these traits, then it gives the similar wounds to the child. Okay, so this is how we get father wounds. And ज़रूरी नहीं है कि एक फादर अगर कोई एक ट्रेट कैरी करता है तो वो दूसरा ट्रेट कैरी नहीं कर सकता है. एक ही फादर में बहुत तरह के ट्रेट्स होते हैं, और इसीलिए हम सभी कोई ना कोई फादर वुंड को कैरी करते हैं, बिकॉज समटाइम्स आवर फादर्स और द मैस्कुलिन एनर्जी इज़ वेरी अब्यूजिव, समटाइम्स इट्स वेरी कंट्रोलिंग, समटाइम्स इट्स लविंग ऑल्सो, बट देन समटाइम्स इट मे एक्ट वेरी वीक, वेरी वेरी इमोशनल. सो ऑल टुगेदर अगर मैक्सिमम टाइम आप कोई ना कोई ट्रेट अपने पेरेंट्स में देखते हैं, द मैस्कुलिन ट्रेट्स इन योर फादर, सो डेफिनेटली these traits give you father wounds. Now, how will you know that you carry the father wounds? How will you know about it? What are the symptoms? So you feel unsafe in the world, insecure. आपको सेफ्टी जोन कभी मिल ही नहीं पाता है. अगर masculine energy was not available to you very strongly or supportive in your life, then you feel that insecurity, that root chakra is never grounded, all right, और आप बहुत unsafe feel करते हैं. lack of worthiness is there, यानी आपको अपनी वर्थ कभी समझ ही नहीं आती, आपको अपनी वर्थ दिखाई नहीं देती है, आप अपने आप को हमेशा दूसरों से कंपेयर करके कम ही समझेंगे, या फिर आप अपने आप में करेजियस, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते हैं. दिस लैक ऑफ करेज, दिस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दिस लैक ऑफ सेल्फ वर्थ. ओके, एंड मे बी यू आर चेजिंग मनी. सो ये आई एम नॉट सेइंग कि ये सारे ट्रेट्स आप में होंगे तभी आप फादर वुंड्स कैरी करते हैं. Any of these traits can tell you that you are carrying some wounds, father wounds. So you might be chasing money, materialistic desires बहुत ज़्यादा है, over ambitious हो, और ये तो बहुत ही कॉमन है आज की दुनिया में. हम सभी को देखते हैं, over ambitious people are in plenty. बहुत सारी डिज़ायर्स है, वो भी रातों रात पूरी हो जानी चाहिए. So they are chasing money like crazy. देन एडिक्शंस, अगर आप किसी एडिक्शन में आप एस्केप कर रहे हैं, कोई पेन को कम करने के लिए, किसी पेन से, किसी परिस्थिति से, कोई सर्कमस्टांसेस से भागने के लिए आप किसी चीज़ का सहारा ले रहे हैं. मे बी यू आर इन ड्रग एडिक्शन, और आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सेक्शुअली इन्वॉल्व हैं. सो ऑल दीज आर एस्केपिस्ट बिहेवियर्स. तो आप कोई ना कोई तरह से जैसे अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग साइन ऑफ father wounds. Then there are no healthy boundaries. I'll give you a sweet example of this. अगर एक लड़की को उसके फादर ने कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया,
कभी भी उसकी तारीफ नहीं की और उसको वो स्ट्रेंथ नहीं दिया कि दैट यू आर ग्रेट, यू लुक ग्रेट, यू आर अ बिग एसेट टू द वर्ल्ड। सो ऐसे अच्छे अच्छे शब्द उसको कभी नहीं बोले, उसे कभी भी ये फील नहीं करवाया कि उसकी डॉटर उसके लिए बहुत स्पेशल है। तो definitely take it for granted that there are no healthy boundaries for this girl, because the first man she meets who gives her all these lovey-dovey talks, she's going to be floored. तो वो बिल्कुल गलत relationships में चली जाएगी. Definitely, she will not be able to choose healthy partners. She will not be able to make those healthy boundaries for herself, because that craving, for that love, that affection, that appreciation always stays with her, okay, till she heals her wounds. And then there are a lot of expectations. Now, lot of expectations, when I'm talking about all these friends, all these traits, it can be from yourself or others. All right, so you could have lot of expectations from yourself or lot of expectation from others. You could be having over ambitious goals, or you could even be having those over ambitious goals for your children or for your spouse, or maybe like expecting too much from yourself. Okay, so all these traits are telling you that you have father wounds. And even if any one of these traits is very dominant in you, so definitely you carry father wounds. You need to heal your relationship with the masculine energy.